नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन को स्वागत करुछि StudyIQ OPSC चैनल रे आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक मु नै के आसी आपन को सामने को द टॉपिक इज ऑल अबाउट थ्रेट टू जगन्नाथ कल्चर जगन्नाथ संस्कृति जदि ओडिसा रो आइडेंटिटी पूरा विश्व दरबार रे जदि आपन देखिबे तबे जगन्नाथ संस्कृति अछि या जगन्नाथ कल्चर बोली आमे कहूजे तो जगन्नाथ कल्चर केवल ओडिसा रे लिमिट नुहे इंडिया रे नुहे ये होची विश्वव्यापी तेणु ये जगन्नाथ कल्चर टी कौन एभली सिचुएशन है व्हाट आर दोज सिचुएशंस इन दीज डेज वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक ये मु डिस्कस एइथिपाई करूची विगत विद इन 1 मंथ्स जदि आपण देखिबे यू माइट हैव सीन इन द न्यूज कि देयर आर डिस्कशंस इन मीडिया सो इट्स अ थ्रेट टू जगन्नाथ कल्चर तब ये पूरा डिस्कशन को पूरा इजी लैंग्वेज रे बुझिबा पई चेष्टा करिबा मु किछि ग्लिम्पसेस आपन को सामने रखिबी कि काहे कि आमे ये एभली गोटे टॉपिक आमे नै कि आसीचु जदि कहिबा ये 21st सेंचुरी रे कि जगन्नाथ कल्चर थ्रेट रे अछि या कोन एभली इंस्टेंसेस हमको विगत दिन रे देखिबा को मिलिछि वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक जगन्नाथ कल्चर कोन दैट आई विल डिस्कस इन ए ब्रीफ and what are the measures that government is taking or that could be taken niya jai paribo se bi discuss nihati kariba in this particular video. So let's start. You can see this in news that Odisha to seek trademark sealed for Puri temple. ये जो trademark seek जो trademark sealed जो अछि this trademark sealed होची जोटा आम पेटेंट राइट्स बोली भी कहूँ जमती आम सिंपल पढ़ीचे कि जीआई टैग गोटे प्रोडक्ट रो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने ओरिजिनालिटी को ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करने वी सीक जीआई टैग द सिमिलर काइंड ऑफ आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करवा ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करने वी आर सीकिंग दिस ट्रेडमार्क सील्ड दैट मीन्स सिंपल हूँ पेटेंट राइट्स नाउ 1000 years ऑफ जगन्नाथ कल्चर 1000 years of Odisha culture, 1000 years of जोटा हमें कही परिबा if you see the bhakti movement era during that era many such Puri was a pilgrimage city बहुत गुड़े साधु संत यानी कि scholars they have visited Puri but एते वर्ष परे why in this 21st century we are thinking of this Jagannath culture is in threat and we are trying to seek the trademark sealed for Puri temple. This is the matter of concern. So let's see in detail. So what government is trying to do, government is seeking this trademark right over certain terms or terminologies you can say. And let me show you those terminologies first and then we'll see what are the threats. You can see here in the news specially jimti terms like Jagannath Dham, terms like Jagannath Dham, terms like Sri Mandir, terms like Mahaprasada. So these terms, to intact these terms or to you would say to prove the originality or authenticity of these terms, so Puri temple administration is seeking the trademark rights. Now first let me show you what are those aspects why we are saying that Puri temple or Jagannath culture is in threat. Let me show you those things first. एबे recently आपण देखिथिबे दीघा यानी कि इन वेस्ट बंगाल गोटे पुरी जगन्नाथ टेम्पल रो गोटे replica you can say have been constructed and the government of West Bengal is involved in that and on the day of inauguration itaku Jagannath Dham boli kuhagala. The term Jagannath Dham was displayed at that place. The first controversy we have seen. The second controversy we have seen, although it was a replica, that is absolutely fine, absolutely acceptable. But calling it a dham, that is a threat to the original Jagannath culture. I will come to that, why it is a threat. Second, जदि controversy आपण देखिबे related to this Digha Jagannath temple, जोटा कि लेटर फेज रे आमे देखिचे जे आपण बड़ पंडा वन ऑफ द जो आपनकर प्रिस्ट थिले
he claimed कि he went to that Digha temple ଏବଂ ସେଠି जो मूर्ति तैयारी ହେଇଛି that was with the remains of those wood जोटा कि original जगन्नाथ करो जो मूर्ति स्थापन करा जाइछि रत्न सिंहासन रे so the remains of that wood जोटा कि यूज ହେଇछि दीघा टेम्पल रे ये गोटे कंट्रोवर्सी भी तापरे देखिबा को मिलथिला मीडिया रे this was the first threat I would say calling it a Jagannath Dham to this Digha temple. Second, you must have seen आपण जानी थिबे इस्कन इज ए कम्युनिटी जे कि वैष्णविज्म को स्प्रेड करे इस्कन कम्युनिटी जे कि कृष्णंकर लॉर्ड कृष्ण को पूजा करती वैष्णविज्म को स्प्रेड करती एवं लॉर्ड कृष्ण को आमे जगन्नाथंकर अवतार बोले को इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बट टाइम एंड अगेन in fact if you see ISKCON temple बहुत जगह अच्छी the worldwide they have this network of Jagannath temple or this ISKCON temple where Lord Vishnu is generally worshipped तो ये worldwide अच्छी गोटे जिनस देखा मिली कि ISKCON तरफ जो रथ यात्रा सेलिब्रेट करा जाउची there is an untimely celebration of रथ यात्रा यदि ओडिसा रे आपण रथ यात्रा देखिबे you will find a separate timeline ओडिसा रा रथ यात्रा बट एमाने गोटे अलगा ड्यूरेशन अलगा टाइम रे गोटे रथ यात्रा सेलिब्रेट करूछन इफ यू सी द लास्ट ईयर यूएस रे द सेम कंट्रोवर्सी अराइज्ड this year also you can see this the Sudarshan Patnaik the international renowned the sand artist in his Twitter handle से ताको टैग करथिले द पुरी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कि साउथ अफ्रिका रे ISKCON तरफ रथ यात्रा वाज ऑर्गेनाइज्ड अनटाइमली जेतबेले पुरी रे जो हमर अछि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रे रथ यात्रा को पालन करा जाय बट दे वर सेलिब्रेटिंग रथ यात्रा इन अ डिफरेंट टाइम and this is not the first instance we have seen in past also there are many instances where Rath Yatra have been celebrated by these ISKCON communities in a different time. This is another factor, another news which compelled us or forced us to think, is Jagannath culture in threat? The third instances I would come. Recently you might have seen there are few devotees. They were served the Mahaprasad on a dining table by a Panda. It was highlighted in the news. So again, Mahaprasad ro gote sanctity achi, Mahaprasad ro gote cultural affinity achi, very close to our heart. And the ritual or the cultural aspect says, while having the Mahaprasad, you have to sit in the ground or the floor. You can't sit in a dining space and dining table and have the Mahaprasad. तो ये किछि जिनस forced us to think कि is Jagannath culture in threat. So first of all, यदि Jagannath culture को हमें बुझिबा को चेष्टा करिबा, although researchers have, there are people those who have spent 30 years, 40 years of their career in researching on this Jagannath culture, but as an aspirant mu kohibi what a common man language re kohibi there are few instances I will highlight what is the culture of or Jagannath culture is all about. The first one is one of the four dhams jo amar charoti dhama achi charoti digare north, south and east, west jemti Puri one among the four dhams, Rameswaram, Dwarka and Badrinath. Tenu Puri is the dham. जगन्नाथ धाम कहले पुरी को ही बुझाए यू कांट कॉल इट यू कांट कॉल अनदर टेम्पल एज ए धाम आपण जगन्नाथ टेम्पल कहि परंती रेप्लिका इन दीघा इज एक्सेप्टेबल बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज धाम बिकॉज चारोटी धाम अछि वन इज पुरी एंड अदर थ्रीज आर रामेश्वरम बद्रीनाथ एंड द्वारका दिस इज वन part of the culture. Second is tribal god you might have heard the story that Nilamadhava bhavare se puja pautile the Lord Jagannath was worshipped by Sabara king Vishwabasu okay gote cave re tanko puja kara jautila to generally it is believed that jo mane be sebayat mane achanti they were the their ancestors were those Savara Raja okay so
This is one aspect of that कि tribal god भी कहा जाए. If you see रथ यात्रा is considered as the पतित पावन यात्रा. पतित पावन यात्रा कौन ना पतित मानकर उद्धार पाए. पतित in the sense कि those are deprived Dalit people, okay, backward, they belong to backward caste. सेमानकर उत्थान पाए रथ यात्रा दिन जेमती मु आपन कहली आषाढ़ मास जो शुक्ल पक्ष अच्छी तार द्वितीय तिथि रे जो रथ यात्रा पालन करा जाए भगवान निजे बड़ देउलर बाहर को आसी थांती दर्शन देवा क्या भक्त मान. सो दिस रथ यात्रा हैविंग दिस सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट कास्टलेस क्लासलेस. दिस रथ यात्रा इज हैविंग सिग्निफिकेंस ऑफ फैटर्निटी भाईचारा. ओके, दिस रथ यात्रा इज सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट दिस आई मीन जोटा आम कहते कि ग्लोबल विलेज रे जो कॉन्सेप्ट अच्छी. सो दैट सिग्निफाइज द रथ यात्रा द वन विलेज द वर्ल्ड इज वन विलेज. तो से रथ यात्रार गोटे सिग्निफिकेंस अच्छी. इट कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड एज पर योर विल एज पर योर माने जिते आपंकर इच्छा हम यू जस्ट सेलिब्रेट द रथ यात्रा. नो, इट लूजेस इट्स सैंटिटी, राइट. इट्स लूजेस इट्स सैंटिटी बिकॉज इट हैज ए प्रोसेस. आई मीन जदि आप देखिए अक्षय तृतीया ठू स्टार्ट करिकी द रथ काम द वर्क ऑफ दिस कार्ड फेस्टिवल जोटा आम कहे कार फेस्टिवल इनफैक्ट तार मैन्युफैक्चरिंग काम स्टार्ट हुए, कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुए, एंड आफ्टर दैट वी हैव दोस स्नान पूर्णिमा और ऑल दोस थिंग्स, एंड देन वी हैव दिस रथ यात्रा. All of a sudden you can't decide the date which is done by or which is being done by ISKCON many a times. It's not the first instance we have seen. In past also they have violated these norms or this cultural aspect of Jagannath Dham or Rath Yatra. Similarly, if you see Mahaprasad ro bhi significance achi. Mahaprasad shows what? The same fraternity. Everyone is equal. If you want to have Mahaprasad, you have to sit on the floor. Be a person from a higher caste, be a person from the lower caste, be a person of higher economic or income group, be a lower income group or economic group, you have to sit on the floor. So Mahaprasad is something, again signifies, it has its own social implication, it has its own religious implication, so it cannot be consumed while sitting at a dining table. So महाप्रसाद रो तार निजर गोटे महत्व अच्छी, तार सांस्कृतिक significance भी अच्छी. Apart from that, if you see the Jagannath culture, it's assimilation of all sect, all religion. If you see जंती जगन्नाथ को आमे वैष्णविज्म बोली कहू, if you see Shaivism, it's also assimilation of Shaivism. It's assimilation of Buddhism. It's assimilation of Jainism. Okay, it's assimilation of Tantricism as well. So it's assimilation of all those religions. Okay, and let me tell you, आपनो दासिया बावरी रो story सुनी थी बे. Dasia Bauri was a from a lower caste. You might have heard about the Bhakta Salavega. He was from the Muslim community. So these stories signifies what this epic or mythological stories says. Every individual is equal in the eyes of God, or everyone is equal in front of the God. That is the reason on the day of Ratha Yatra, Raja comes to the Ratha and Chera Pohara, जो ritual टी अच्छी, यानी कि sweeping on the cart, that was the significance कि no one is like I mean above जोटा कौन दी devotion ऊपर के ही नुअंती, तमाने राजा एवं प्रजा all are equal in front of the Lord Jagannath. तो ये जो जिनसे अच्छी and सुदर्शन चक्र भी जब देखिए जो चतुर्धा मूर्ति हमें कहूँचे त्रिमूर्ति पर चतुर्धा मूर्ति सी हूँ सुदर्शन चक्र व्हील ऑफ सन्स चैरियट. सुदर्शन चक्र को व्हील्स ऑफ सन चैरियट बोले ये कह जाए कि पूरा सौरमंडल से चक्र चारि पाखे बुलूची. दिस इज द सिग्निफिकेंस. तेणु जगन्नाथ कल्चर इज नॉट दैट सिंपल. इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिकेशन. एवरी डिटेलिंग इज हैविंग सच ए elaborated interpretation, such a significance. आमे रैंडम रथ यात्रा करिबा, रैंडम मंदिर टे तैयारी करिकी जगन्नाथ धाम करिबा, आमे रैंडम
डाइनिंग रे बसी कि महाप्रसाद सेवन करिवा, this is not allowing or this is not allowed by the Jagannath culture. So whoever is watching this video, I request you all, I pray to all कि please do not try to violate this culture. This culture is not associated with only 4.5 crores of Odia people. This is very associated with the Hindu religion, the Sanatani religion. This is the belief system of the Sanatani system. Okay. Now, my second aspect would be, what are the measures the government is trying to do, at least जो जगन्नाथंकर जो कल्चर टी अच्छी जो सैंटिटी अच्छी से सेमती मेंटेन हे करो. फर्स्ट थिंग which is supported by experts also कि वर्तमान the time has come which we have to shield the trademark. हमको trademark सहित protect करवा को पड़ेगा जगन्नाथ culture को. No other that place or temple would use that. Okay, what are they? जगन्नाथ धाम, श्री मंदिर, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाचल धाम, बड़दांड, महाप्रसाद, नीलचक्र. These words should be protected through trademark. Second, the Sri Mandira temple administration has requested ISKCON not to organize Ratha Yatra apart from the mentioned date. Third component, again the temple administration have given the instruction to all devotees and pandas and pandits of the temple that not to violate that norms कि dining space रे बसी कि आपण जगन्नाथ महाप्रसाद को सेवन करिवे. At least this would make a kind of acceptance among the people. At least हमें से cultural norms को violate करिवा नहीं. That's it from my side with respect to this Jagannath culture. समस्ते चेष्टा करिवा जगन्नाथ culture को protect करिवा पाई. This is very close to our heart. It should not be violated like this. Okay. Anyway, जो मैंने हमारा सिविल सर्विस प्रिपेयर करने को चाहूँगी परिपूर्ण बैच इज देयर. इंग्लिश ओडिया रे अपन करे बैच टी अच्छी. सिमिलरली वी हैव दिस आरंभ बैच एज वेल. इंग्लिश हिंदी बैच हमर अच्छी एंड हमर टेस्ट सीरीज बैच भी अच्छी जो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी चाहिए से मध्य कवर करि परिबे. तेणु वर्तमान अर्ली स्टार्ट ऑफर चली जो मैंने प्लान करूँ जॉइन करबा पई बैच को से माने जॉइन करि परिबे कारण 31 पर्यंत ही वैलिड अच्छी. तापर पुणी थे ओरिजिनल प्राइस को आसीबो. अर्ली स्टार्ट ऑफर रो मेन पर्पस होची आपण डिसीजन नियंतु. वर्तमान समय होची जदि आपण ग्रेजुएशन सारी पोस्ट ग्रेजुएशन सारी डिसीजन नियंतु सिविल सर्वेंट हवा पई तबे ये होची सुवर्ण सुजोग. जस्ट ट्राई टू हैव इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ StudyIQ team जो कि the best team in the industry and will provide you all those facilities. And just remember, use J in Live code to get the maximum discount. Okay. If you want PDF, you can join this Telegram to get that. Thank you.